Hello everyone. Let's continue with the special types of matrix. In the last lecture we completed symmetric matrix and skew symmetric matrix और हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली थी. तो अब स्टार्ट करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स से. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता था. और सिमिलरली हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसमें, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम क्या लिखते हैं, ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ए के इक्वल आ जाता है तो जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी. सपोज अगर ए रियल मैट्रिक्स बन जाए तो सारी एंट्रीज रियल नंबर से होंगी. ए अगर रियल मैट्रिक्स है तो रियल मीन्स उसकी हर एक जो एलिमेंट होंगे सारे रियल नंबर हो जाएंगे. और रियल नंबर का हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, उसी नंबर एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा. तो ए कॉन्जुगेट ए के इक्वल हो जाएगा और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे ए. तो अगर ए रियल मैट्रिक्स बन जाती है तो वो हर्मिशियन के साथ साथ हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन जाती है. ओके, एग्जाम्पल ले सकते हो आप हर्मिशियन मैट्रिक्स का. सपोज 1 2 and 1 plus iota 1 minus iota. अगर आप ए कॉन्जुगेट निकालो, ए कॉन्जुगेट क्या आएगा आपके पास, 1 इधर आयोटा 1 माइनस आयोटा 2. नाउ इफ यू विल ट्रांसपोज ऑफ दिस you will get 1 plus iota 1 minus iota and 2. So A conjugate transpose is equal to A. This implies that A is Hermitian matrix. Okay, now let's do some properties of this. जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होंगे, रियल एंट्रीज होंगी उसकी. क्योंकि डायगोनल का कॉन्जुगेट करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे, वो उसके इक्वल ही आना चाहिए. क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए. और कोई किसी नंबर का ट्रांसपोज उसी की कॉन्जुगेट उसी के इक्वल हो तो ऐसा कब होता है, इफ एंड ओनली इफ ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा रियल एंट्रीज ही होंगी. सेकेंड प्रॉपर्टीज, इफ A and B are Hermitian matrix of order n cross n, then A plus A conjugate transpose A into A conjugate transpose A conjugate transpose into A, ये सब क्या हो जाएंगे, हर्मिशियन. K into A power n is also Hermitian, where K is an scalar.
फिर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज आल्सो हर्मिशियन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, इफ a and b both are Hermitian and it is given that AB is equal to BA. अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन है तो AB is also Hermitian. और जो ये कंडीशन होती है आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन होती है. अगर आपके पास गिवन है ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा. और अगर गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए और एन बी आर आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए बी इज आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स. नेक्स्ट आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होता है, इसी में हर्मिशियन में क्या हो जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा. ओके, नाउ वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो with negative sign. Let's do the properties of Hermitian matrix. So first is diagonal elements. हर्मिशियन में क्या थे रियल एंट्रीज, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू हर्मिशियन क्या हो जाएगा आपके पास इस जीरो हो जाएगी. देखो रियल एंट्रीज तो होंगी, इसमें क्या हो जाएगा ए आई आई आपके पास माइनस ऑफ ए आई होगा तो 2ai इज इक्वल टू 0 एंड इट विल इम्प्लाइज दैट ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई. ओके, सो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके पास 0. सेकेंड इज इफ ए इज एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n की, देन a माइनस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन. ओके, थर्ड है इफ a is skew Hermitian a कोई मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन देन k into a is also skew Hermitian. Okay, and scalar. And fourth is if a and b both are skew Hermitian matrix then a plus b and a minus b are also skew Hermitian. Matrix provided they are defined. Okay, and AB is also skew Hermitian if and only if AB is equal to minus of BA.
हर्मिशियन में क्या था, स्क्यू हर्मिशियन में प्रोडक्ट हर्मिशियन कब होगी, जब ए बी इजिकल टू बी ए हो जाएगा, और इसमें कब होगी, जब ए बी इजिकल टू माइनस ऑफ बी ए हो जाएगा. ओके, नोट. Every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ओके, कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2. जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक, एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ए इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट, ये हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, एज अ फॉर्म ऑफ दिस. नेक्स्ट टाइप आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. A real matrix, real square matrix is orthogonal if and only if A transpose is equal to identity is equal to A transpose. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए. तो दोनों कंडीशन से आप क्या कह सकते हो कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसमें ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है. ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज ही होगा. Let's do some properties of these. So first is, if A is orthogonal, matrix, then A transpose is also orthogonal. Second is, if A and B are orthogonal, अगर A और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, then their product AB and BA are also orthogonal. Orthogonal matrix. Okay. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर A ऑर्थोगोनल है, इफ A इज orthogonal matrix, then
sum of the square of the element of every row is 1. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो 1/√2 फर्स्ट रो का स्केयर, इसका स्केयर करेंगे और इसका स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे, कितना आएगा 1, इसका स्केयर 1. तो अगर रो के एलिमेंट का सम भी इफ एंड ओनली कंडीशन होती है तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अगर आपको कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल चेक करनी है तो आप ये कंडीशन चेक करके देख सकते हो. और तो आपके पास सम ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स need not be ऑर्थोगोनल. दैट इज अगर आपके पास 2 ए और बी मैट्रिक्स हैं तो जरूरी नहीं कि a+b इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बने. एग्जांपल ले सकते हो, सपोज 1 0 0 1 है और दूसरी मैट्रिक्स है -1 0 0 -1. दोनों को ऐड करो 0 0, ये दोनों क्या ऑर्थोगोनल है, बट दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल. Similarly, their difference need not be orthogonal. Okay. नेक्स्ट आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स. यूनिटरी में क्या होगा, जैसे ऑर्थोगोनल में था ए ट्रांसपोज, इसमें क्या हो जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए. वही सेम है जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक थी, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन थी, और जैसे ऑर्थोगोनल है सिमिलरली यूनिटरी मैट्रिक्स है. एग्जांपल आप ले सकते हो इसका -i0 0 -i. जब आप ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे और ए इंटू ए कॉन्जुगेट तो यू विल गेट आइडेंटिटी एंड इक्वल टू दिस वन. तो यूनिटरी मैट्रिक्स की आपकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी. लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस. So first is if A and B both are unitary matrix, then AB and BA are also unitary matrix. जैसे ऑर्थोगोनल में भी सेम था, ए और बी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, क्या आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स. Okay.
Third property is square matrix n cross n be a square matrix is unitary if and only if its rows or columns form an orthogonal set of vectors. Okay, सो ये यूनिटरी मैट्रिक्स थी और ये सब प्रॉपर्टीज थी इसकी. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपके पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडम्पोटेंट आइडम्पोटेंट में क्या होता है, अगर आपके पास ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, देन अगर ए स्केयर इज इक्वल टू ए आ जाता है, उसका स्केयर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट. एग्जाम्पल ले सकते हो आप. 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केयर ऑलवेज आइडेंटिटी आएगा. 1 0 0 0 इसका स्केयर भी इसी के इक्वल आ जाएगा. अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. अगर ए कोई मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की ऑर्डर एन क्रॉस एन है, फिर उसकी एंट्रीज क्या हो जाए, विद ऑल एंट्रीज 1/n. देखो अगर ऑर्डर n है तो यहाँ 1/n, अगर मान लो m होता तो 1/m. विद ऑल एंट्रीज 1/n इज आल्सो आइडम्पोटेंट. यहाँ पे ए जरूरी नहीं आइडम्पोटेंट हो, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज 1/n, तो ऑलवेज क्या होती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो. सेकंड आपके पास ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है. आइडम्पोटेंट then A transpose is also important. थर्ड आपके पास अगर A आइडम्पोटेंट है, potent matrix, then I minus A is also idempotent. Next property is if A and B are idempotent. Idempotent and K be any scalar belongs to field. Then field K belongs to, आप R से भी ले सकते हो, C से भी ले सकते हो, तो कोई स्केलर है. Then first is K into A is also idempotent if
एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1, बस दो ही कंडीशन में आइडेम्पोटेंट हो सकता है। इज इफ भी हो जाएगा a की पावर k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज आल्सो आइडेम्पोटेंट। ये हो जाएगा आपके पास ए बी इज आइडेम्पोटेंट if and only if AB is equal to BA is equal to अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है AB is equal to BA, देन AB आल्सो आइडेम्पोटेंट हो जाएगा प्रोडक्ट। और अगर AB आइडेम्पोटेंट है उसका सम आइडेम्पोटेंट कब होगा? A plus B is idempotent if and only if AB is equal to BA is equal to 0 provided they are defined। then मैट्रिक्स हो जाए प्रोडक्ट उनकी, तो आपके पास सम भी आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। तो ये थी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लेट्स डू नाउ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट में क्या था? ए स्केयर ए के इक्वल आना चाहिए, लेकिन इनवॉल्यूटरी में क्या हो जाएगा? ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कंडीशन होती है इसमें। इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ए इज इक्वल टू -1 0 0 -1, इसका स्केयर करोगे आप तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नाउ लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। So what are the properties? First is if A and B are involuntary matrix, then A plus B is also involuntary if and only if AB plus BA plus identity equal to 0। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो आपके पास क्या आता है? वो भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आ जाती है। ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट में क्या था? ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसमें ए बी प्लस बी ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इफ ए एंड बी involuntary matrix with AB is equal to BA, then AB is involuntary। सेम प्रॉपर्टी किस में थी? आइडेम्पोटेंट में भी थी, उसमें भी ए बी इक्वल टू पी है, तो एक प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज,
if A is involuntary, matrix, then K into A is also involuntary if and only if K is equal to प्लस माइनस वन. आइडम्पोटेंट में क्या था, K की वैल्यू आइदर 0 और K और इसमें है प्लस माइनस वन है, तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो जाएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, इफ ए इज इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स देन A transpose n e power n is also involuntary. A क्या है, involuntary matrix. Then A transpose A power n, where n belongs to natural number, is also involuntary matrix. Okay, and the last property is if we interchange the two rows of an identity matrix, then we get an involuntary matrix. For example, if you take the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and if you interchange the two rows, suppose ये interchange कर दी first R1 and R3, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, तो जब इसका स्केयर करोगे A स्केयर, देन A स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा. बस 2-3 मैट्रिक्स और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.